Hi, my name is Sunaina, and today we are going to talk about conversion of speed units. I'm sure you all know what is speed, what is time, and what is distance. So once we come up with speed, distance, and time, we also have one more topic, which is conversion of speed units. A lot of kids do face problems because I don't know what's wrong. They start memorizing stuff and they start working with methods which they find difficult. But I am going to teach you one method that I learned a bit too late, and this was one topic that I always had issues with too. But Alhamdulillah, once I've learned this topic, once I've learned this method actually, I find it very easy. All right, so let's begin. Conversion speed units. As per CAIE, this is a small topic in arithmetics. Okay, as usual, my resource book is going to be New Syllabus Mathematics. All right, so before we jump onto that, we should know what is speed. Speed of anything consists of two components, unit of speed. For suppose one is distance and that is another one is time. Because when we talk about speed, the formula goes like distance upon time. Hence, these are the two things that we are going to be using. First, suppose a few examples of speed units are meters per second, kilometers per hour, centimeters per second, meters per hour, and so on. It keeps on going like that. After that, we have distance conversions that we need to remember. These are things that we cannot forget, and these are to be remembered. 1 kilometer is 1,000 meters. You need to remember this because if we are working with conversions, these are things that we are supposed to remember. Another one is 1 meter is 100 centimeters, 1 centimeter is 10 millimeters, 1 kilometer is 100,000 centimeters. ये हमें पता होना चाहिए. So don't forget that. All right, after distance, we also have a few more things that we need to remember, and that is time conversions. For suppose 1 hour is 60 minutes, 1 minute is 60 seconds, and 1 hour is 3600 seconds, which is because 60 multiplied by 60 is 3600. तो ये तो हम पहले याद रखने पड़ेंगे. इसको याद नहीं रखोगे तो फिर then conversion of speed units become very difficult. Conversion of speed units is usual questions में kilometers per hour to meters per second होती है, फिर meters per second to kilometers per hour होती है. However, इसके अलावा और भी conversions हमसे पूछी जा रही होती हैं. Kilometers per minute to centimeters per second, etc. इस तरह से जब एक मेथड हम सीख लेंगे ना तो उसके बाद कहीं से भी कहीं की भी कन्वर्जन हमें आ रही होगी या पूछी जा रही होगी, इट इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी बिग डील. तो आई गेस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बहुत छोटा सा टॉपिक है, हम इसकी कुछ कन्वर्जन्स करके देख लेते हैं. आई एम नाउ गोइंग टू शो यू अ फ्यू क्वेश्चंस. लेट्स गेट आउट टू दैट. ऑलराइट, फर्स्ट सपोज this question is asking me to convert the following units as required: 242 meters per minute to kilometers per hour. मैं बड़ा स्लोली चलूंगी, लेकिन गौर से देखना मैं कर क्या रही हूँ, ठीक है. द फर्स्ट स्टेप इज जो 242 meters per minute है ना, पहले तो ये लिख लो. 242 meters per minute को meters ऊपर अपॉन minutes इस तरह लिख लो. Then leave some space because यहाँ पे हमें बाद में अभी कुछ और भी लिखना है. हमें चेंज किस में करना है? हमें चेंज करना है किलोमीटर्स पर आवर. ये मेरा फर्स्ट स्टेप है. वंस यू आर डन विद दिस स्टेप, इसके बाद माय नेक्स्ट स्टेप इज टू मेक सम डिविजंस एंड मल्टीप्लिकेशंस. नाउ मुझे ये बताओ, मीटर से किलोमीटर जाना है, व्हिच मींस 1000 का कुछ है. If we are going from kilometers to meters, we usually multiply. लेकिन इस केस में हमें मीटर टू किलोमीटर जाना है, which means we are going from a smaller unit to a bigger unit, we divide. Hence, I'm going to write divided by 1000 upon minutes से
आवर्स जाना है. अगेन स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट मीन्स डिवाइड. तो मैं अब करूंगी डिवाइडेड बाय. लेकिन 1 आवर इज हाउ मेनी मिनट्स? 1 आवर इज 60 मिनट्स, हेंस डिवाइडेड बाय 60 होगा. अब अगर हम इस क्वेश्चन को विदाउट द यूनिट्स लिखना चाहें तो वी आर गोइंग टू राइट 242 divided by 1000 upon divided by 60. यही है ना? अच्छा, अब हमें फ्रैक्शन में अगर एक बात याद हो तो फ्रैक्शंस में डिवीजन कुछ होता नहीं है. जब जब हमारे पास डिवीजन आ जाता है वी यूजुअली चेंज इट इनटू मल्टीप्लिकेशन. आपका जो डिवीजन का साइन है वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है. एंड द सेकंड फ्रैक्शन इज यूजुअली, or sorry, not usually, always reciprocated. Reciprocate का मतलब होता है flip कर देते हैं. So let's write my 242 as it is. Division बन गया multiplication. 60 ऊपर आ गया और 1000 नीचे चला गया. ठीक है. अब ये क्वेश्चन कोई ज्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं. You just have to multiply 242 by a 60 and then divided by the 1000. Before doing that हम लोग अगर इन zeros को cancel कर देंगे तो लाइफ थोड़ी सी और आसान हो जाएगी. And then you simply multiply 242 by a 6 and you get a 1452. 1452 divided by, ये हमारे पास अभी 100 रहता था तो ये 100. Now once you divide, decimal point नहीं है, यहाँ पर है, 2 zeros means 1 and 2. तो मेरा आंसर आ जाएगा 14.52. कन्वर्जन हो किस में रही थी? किलोमीटर्स पर आवर में. तो फाइनल आंसर में यूनिट लिख दो किलोमीटर्स पर आवर. Let's do another question and then see how does it go about. Okay. In this case, the question is asking you to convert 8.4 kilometers per minute to kilometers per hour. Again, मेरा first step है question को method में ले आओ. You have 8.4 kilometers upon minute और इसकी conversion हम कर रहे हैं to kilometers per hour. Now because we're going from kilometers to kilometers, it means we are simply multiplying by 1. कुछ और तो हम कर ही नहीं रहे. Upon ये जो minutes है ये hours बन रहा है जो हमारे पिछले क्वेश्चन में भी हो रहा था. Again, it is something of the 60 because smaller unit to bigger unit we divide by 60. Hence, my question has become 8.4 multiplied by 1 upon divided by 60. As we can see, जो multiply by 1 है तो ये तो बिल्कुल सही जगह पर है. इसकी तो जगह चेंज हमें करने की कोई नीड ही नहीं है. लेकिन this 60 is in the division form, which means इसको ऊपर लेकर जाना है. Hence, my question now becomes 8.4 multiplied by 1 और ये जो 60 नीचे डिवाइड हो रहा था ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाता है. If you want, because नीचे कुछ भी नहीं है तो हम एक इमेजिनरी 1 सपोज करते हैं. ये लिखो या ये नहीं लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. I'll write it so that confusion ना. अब करना क्या है? सिंपली 8.4 को मल्टीप्लाई करना है 1 से और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है विद 60, which is not very difficult. Again, 8.4 multiplied by 60 will simply give you a 504 और हमारा यूनिट हमें चाहिए था किलोमीटर्स पर आवर. That is it. See, basically इस मेथड में ना हमारी सिर्फ ये जो फर्स्ट वाली लाइन होती है ना जिसमें हम लिख रहे होते हैं कि करना क्या है, बस. बाकी की कैलकुलेशन तो वैसे ही बड़ी आसान है. लोग याद कर रहे होते हैं कि यार किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर मिनट होगा तो डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस होगा, फिर ये करना पड़ेगा. अरे भाई क्यों करते हो? कन्वर्जन हम सबको याद होनी चाहिए. हाँ, दैट इज फॉर श्योर. उसके बाद इस मेथड में याद करने को कुछ है ही नहीं. किलोमीटर्स टू किलोमीटर्स है, कर दिया 1. मिनट्स टू आवर्स है, कन्वर्जन पता है, कर दिया. सिर्फ यूनिट्स याद रखने, डिस्टेंस के यूनिट्स याद रखने, टाइम्स की कन्वर्जन के, और उसके बाद ये याद रखना है कि जब बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं और स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट जा रहे हैं तो फिर हम डिवाइड कर रहे हैं. एंड दैट इज इट. इसके अंदर और कोई मसला है ही नहीं. एक और क्वेश्चन करते हैं. ऑलराइट,
इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 84 किलोमीटर पर मिनट, सॉरी 86, माय बैड। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। 86 किलोमीटर पर मिनट को चेंज करना है मीटर्स पर सेकेंड में। ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। अब सोचो कि यार जाना मुझे कहाँ है, मुझे किलोमीटर से मीटर की तरफ जाना है, which means 1 किलोमीटर is 1000 meters. But kilometer to meter का मतलब है bigger unit to smaller unit, which means multiply by 1000 upon minutes to seconds. 1 minute has 60 seconds, लिख दिया 60. मिनट बड़ा यूनिट है, सेकेंड स्मॉल यूनिट है, तो अगेन मल्टीप्लाई बाय 60. ये तो और भी आसान हो गया। बचा क्या, 86 मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन मल्टीप्लाइड बाय 60. ये मेरा क्वेश्चन है। क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, रेसिप्रोकेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। लाइफ इज इजी पीपल। तो ये 0 और ये 0 काट दो, 86 को मल्टीप्लाई करो विथ 100 एंड यू विल गेट 8600, और उसके बाद उसको डिवाइडेड बाय 6 कर लेना, सॉरी, एंड योर फाइनल आंसर विल बी 1433. जस्ट लेट मी राइट इट डाउन, 1433.3 meters per second. ये यूनिट लिखना मत भूला करो, बिकॉज इस यूनिट के बड़े मार्क्स होते हैं। ठीक है, अभी भी CIs में भी, एवरीवेयर, सो जस्ट डोंट फॉरगेट राइटिंग इट। बहुत इजी सा मेथड है, ठीक है ना। लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस. क्वेश्चन में है 367 किलोमीटर पर आवर टू मीटर्स पर सेकेंड. तो पहला स्टेप था 367 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज कर रहे हो मीटर्स पर सेकेंड में. नाउ बिकॉज किलोमीटर्स टू मीटर्स जा रहे हैं, तो कन्वर्जन इज ऑफ 1000, and because bigger unit to smaller unit you are multiplying upon hours to seconds, which means 3600. hours और seconds में से hours is a bigger unit, तो इसीलिए multiply. The question becomes easy peasy. Multiply by 1000 upon 3600. ये 2 zeros gone, ये 2 zeros gone. 367 multiplied by, अगर मैं 10 और इसको सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास आता है 5/18. Hence now all I have to do is multiply the 367 by the 5 and divide my final answer with 18, which is not a very difficult thing. Again हम कर लेते हैं 367 multiplied by 5. मेरा आंसर आता है 1835, और इस 1835 को मुझे डिवाइड करना है by the 18 to get my final answer, which is 101.94. आंसर है meters per second. So meters per second. That is it. So yeah, this topic is not very difficult. हमने अपने लिए खुद मुश्किल बनाई हुई होती है हर चीज, क्योंकि हम याद करने में लग जाते हैं सब कुछ. Maths is not about learning, maths is about understanding. So make sure you're doing that. That's it for today. ठीक है ना? See you in another video. Bye bye people. Take care.